A very good morning, dear student. My dear student, today we are starting a new chapter, and the new chapter name is Dissolution of a Partnership Firm. My dear student, what is meaning of dissolution of partnership firm? Here it is written, according to section 39 of Indian Partnership Act 1932, dissolution of the firm means dissolution of partnership among all the partners in the firm. My dear student, dissolution means winding up, ख़त्म हो गई बिजनेस को, पार्टनरशिप को अगर हम ख़त्म कर रहे हैं तो डैट इज़ कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. तो माय डियर स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, अगर आप पार्टनरशिप फर्म को टोटली ख़त्म करना चाहते हैं, दैट व्हाट इज़ द प्रोसीजर? माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to sell out the every assets. Then when the cash will received in the business, then you have to pay the amount of liabilities, external liabilities, and after it internal liabilities you should pay, and that's why the cash amount will be finished. And my dear student, if the assets has sold out and liabilities का अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो डेफिनेटली इन दैट सिचुएशन योर बैलेंस शीट हैज़ फिनिश्ड, एंड इफ योर बैलेंस शीट हैज़ फिनिश्ड देन योर बिजनेस हैज़ वाइंड अप. माय डियर स्टूडेंट, योर बिजनेस हैज़ डिसॉल्व्ड, योर पार्टनरशिप हैज़ डिसॉल्व्ड. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द वर्क, माय डियर स्टूडेंट. नाउ माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल लर्न दिस पॉइंट. Settlement of account, section 48. My dear student, what is the section 48? What section 40 is saying? और क्या प्रोसेस है वो बताना चाह रहा सेक्शन 48 अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. किस तरह से हमें लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना चाहिए? फर्स्ट लायबिलिटी, सेकंड लायबिलिटी, थर्ड लायबिलिटी, फोर्थ लायबिलिटी. व्हाट इज द सीक्वेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, first liability we should pay, then second liability, for third liability. My dear student, in the question we will learn these things. Now we have some questions. This is the first question. In the first question it is written, the firm of XYZ, the firm of XYZ was dissolved on 31st March 2019. My dear student, the firm has dissolved, फॉर्म हैज़ वाइंड अप, ख़त्म हो गई है ऑन 31st March 2019. द डेट इज़ दिस 31st March 2019. एंड नाउ दे आर सेइंग वाई डिमांड्स, वाई इज़ अ पार्टनर एंड वाई इज़ डिमांडिंग, वाई इज़ डिमांड दैट हिज लॉन ऑफ ₹25,000, his loan of ₹25,000. It's mean, my dear student, Y has provided the loan to the firm 25,000. Or now Y is demanding that his loan amounted to ₹25,000 should be paid before payment of capital of the partner. Y is saying पहले मुझे पेमेंट कर दीजिए मेरे लोन का, इसके बाद एंड में XYZ सबकी जो कैपिटल है एंड में आप कैपिटल का पेमेंट करना. तो कैपिटल इज़ अ इंटरनल लायबिलिटी, बट एट प्रेजेंट Y इज़ लोन. तो Y इज़ लोन इज़ अ, माय डियर स्टूडेंट, we can say this Y is a partner, but my dear student, capital is a internal liability, but at present if any firm is taking loan, if from the partners also, then definitely this is external liability, and first of all we should pay the loan, then we should pay the capital, my dear student. Now the question is saying this, but X and Z demand, X और Z भी demand कर रहे हैं that capital should be paid before the payment of Y's loan. वो कह रहे हैं कि भैया Y के लोन के देने से पहले हमारी कैपिटल का पेमेंट कर दिया जाए. Who is correct? Now they are saying who is correct. Now my dear student, who is correct? Yes, my dear student. Now we will come on the section 48 according to Partnership Act 1932. Section 48 हमसे क्या कह रहा है? Clearly they are saying, यहाँ पर हम पढ़ेंगे Y is correct. My dear student, Y is correct. Why is correct? Why is saying that first of all my loans payment should be paid and then capital payment? So yes, my dear student, first of all external liability should be paid and then internal liability.
This is a procedure, and this procedure is saying the section 48 of Partnership Act 1932. So according, why is correct? According to the section 48 of the Indian Partnership Act 1932, partners loan is paid before payment of the capital. So my dear student, section 48 is this saying like this, my dear student. So this is the answer. Now I will come on the next question, my dear student. Next is the second question is this: all the partner decide to dissolve the firm. ठीक है, सभी पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए ऑन 31 मार्च 2019. ओके, नाउ दे आर सेइंग व्हाई अ पार्टनर डिमांड्स. वो क्या डिमांड करता है हमसे? डेट हिज लोन ऑफ ₹80,000, जो उसका लोन है 80,000 का, शुड बी पेड. They is saying 31st March 2019, why a partner demands that his loan of ₹80,000 should be paid before payment of Mrs. X loan. My dear student, now they are saying Mrs. word is here. Mrs. X loan. It means this is not the X loan. This is the Mrs. X loan. इसका मतलब X से हमने लोन नहीं लिया था, फॉर्म ने X से लोन नहीं लिया था, फॉर्म ने X की वाइफ से लोन लिया था. इसका मतलब X की वाइफ नहीं, तो X वाइफ इज़ नॉट अ पार्टनर ऑफ द फॉर्म. तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर X की वाइफ से लोन लिया गया है तो दिस इज श्योरली एक्सटर्नल लायबिलिटी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड पे दिस लोन अमाउंट. मिसेज वाइज लोन 20,000, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड पे दिस अमाउंट. माय डियर स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग that the firm has take the Y's loan. Y is the partner. From Y, the firm has taken the loan, and from Mrs. X, firm has taken the loan from Mrs. X also. So Mrs. X is an external liability, because Mrs. X is not a partner at present. Now, but X, another partner, demands. X is demanding that Mrs. loan should be paid before payment of Y's loan. Who is correct? My dear student, मिस्टर जो X हैं वो कहते हैं कि भाई जो हमारी जो वाइफ है उन्होंने जो लोन दिया है फॉर्म को उसका पहले पेमेंट करना चाहिए और बाद में आप वाई का लोन का पेमेंट कर देना. वाई इज द पार्टनर, बट मिसेज एक्स इज़ नॉट अ पार्टनर. तो सबसे पहले मिसेज एक्स के लोन का पेमेंट कर दिया जाए, बिकॉज शी इज़ नॉट अ पार्टनर, शी इज़ एब्सोल्युटली आउटसाइड लायबिलिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेमेंट करना चाहिए मिसेज एक्स लोन का, बिकॉज मिसेज एक्स लोन इज़ नॉट अ पार्टनर. माय डियर स्टूडेंट, नाउ दे आर सेइंग हु इज करेक्ट. द आंसर इज दिस, एक्स इज करेक्ट, बिकॉज एक्स इज सेइंग कि मेरी वाइफ को आप सबसे पहले इसका लोन का पेमेंट करो. दैट्स वाई एक्स इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48. यस माय डियर स्टूडेंट, Section 48 saying like this: according to Section 48 of Indian Partnership Act 1932, outside party debts are paid before payment of partner's loan. पार्टनर के लोन से पहले आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट करिए. तो माय डियर स्टूडेंट, प्रोसेस इज दिस: फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड पे द आउटसाइडर लायबिलिटी, देन वी शुड पे द पार्टनर्स लोन, देन वी शुड पे द पार्टनर्स कैपिटल. तो पार्टनर्स कैपिटल we should pay at the end. So my dear student, this is the process of, first of all we should pay the external liability, then we should pay the partner's loan, then we should pay the partner's capital. This is a procedure. So now section 48 of Indian Partnership Act 1932 is saying like this. That's why Mr. X is correct. So now they are saying Mrs. X is not a partner in the firm. So that's why Mrs. X को सबसे पहले पेमेंट मिलना चाहिए. नाउ माय डियर स्टूडेंट, नाउ आई विल कम ऑन द थर्ड क्वेश्चन, एंड थर्ड क्वेश्चन में हम चेक करेंगे कि व्हाट सेक्शन 48 इज सेइंग. इन दैट क्वेश्चन दे आर सेइंग ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2. ओके माय डियर स्टूडेंट, ए एंड बी आर पार्टनर एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. मिसेस ए, माय डियर स्टूडेंट, A and B are the partner in a firm sharing profit loss in the ratio of 3:2. Now they are saying Mrs. word.
Mrs. A, इसका इट्स मीन Mrs. A is not a partner in a firm. Mrs. A has given a loan of rupees 20,000, okay, to the firm. फर्म को उसने लोन दिया है एंड द फर्म हैड ऑल्सो टेकन अ लोन ऑफ रुपीज़ 10,000 फ्रॉम बी. बी से भी लोन लिया गया है. ओके, बी इज़ अ पार्टनर. द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड. नाउ फर्म हैज़ डिसॉल्व्ड एंड इट्स एसेट्स वर रियलाइज्ड. माय डियर स्टूडेंट, रियलाइज्ड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड. जब हमने एसेट बेची तो हमें अमाउंट रियलाइज्ड हुआ, वसूल हुआ, दैट इज़ 25,000. माय डियर स्टूडेंट, एट प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज दिस कि ए एंड बी आर पार्टनर and the profit sharing ratio, my dear student, 3:2, and Mrs. A's loan. Mrs. A's loan, how much Mrs. A's loan? This is 20,000. Amount is 20,000. Mrs. A's loan is 20,000. फर्म ने Mrs. A से लोन ले रखा है 20,000 का, और फर्म हैज़ ऑल्सो टेकन लोन ऑफ रुपीज़ 20,000 फ्रॉम बी. बी इज़ अ पार्टनर, बी से भी उसने लोन लिया है 10,000 का. 20,000 10,000 टोटल 30,000 का लोन लिया गया है. Now they are saying the firm was dissolved. Now firm has dissolved, फर्म खत्म हो गई, and its assets were realized. उसकी एसेट से जो वसूल हुआ पैसा बेच के, that is 25,000. My dear student, the debt is, अगर हम उधार पैसे की बात करें तो हमने मिसेस ए से कितना लिया है 20,000 और मिस्टर वाई बी से कितना लिया हमने 10,000. तो माय डियर स्टूडेंट, टोटल लायबिलिटीज आर 30,000 एंड हमने अपनी एसेट बेची है कितने 25,000 में. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट वी कैन पे द 30,000 अमाउंट. लायबिलिटी का पेमेंट कर ही नहीं पा रहे बिकॉज हमारे पास इतना पैसे है ही नहीं. एसेट बेच के तो 25,000 रुपीज़ आए. अब वो कहते हैं स्टेट द ऑर्डर. अब आपको ऑर्डर बताइए, सीक्वेंस बताइए ऑफ पेमेंट. पेमेंट का सीक्वेंस क्या होगा? व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ मिसेस एज लोन? मिसेस ए को लोन को कितना पेमेंट करना है एंड बीज लोन, और जो बी हमारा पार्टनर है उसको कितना पैसा हमें देना है विद रीज़न. इफ़ देयर इज़ नो अदर क्रेडिटर्स, अगर हमारे पास और कोई क्रेडिटर नहीं है, केवल यही क्रेडिटर है, ठीक है. मिसेस बीज लोन, एज लोन से हमने पैसा लिया है, मिसेस एज लोन हमारे पास है, और हमने किससे लोन लिया है? बीज लोन हमारे पास है. तो हमें इन दोनों का पेमेंट करना है. माय डियर स्टूडेंट, नाउ व्हाट सेक्शन 48 सेइंग? Now they are saying according to section 48 of Indian Partnership 1932, Mrs. A's loan. Yes, my dear student, because Mrs. A is not a partner, तो that's why सबसे पहले इनको पेमेंट करना चाहिए. Mrs. A's loan of rupees 20,000, फुल अमाउंट 20,000, ठीक है. बीइंग आउटसाइड पार्टी, क्योंकि ये आउटसाइड पार्टी है, दिस इज नॉट अ इंटरनल पार्टी. आउटसाइड पार्टी डेब्ट विल बी पेड before payment of B's loan. Okay, so B will paid up the available cash of rupees 5,000. My dear student, Mrs. A का जो लोन था हमारे पास था 20,000, और यहाँ पर हमने B से जो लोन लिया था वो लिया था हमने 10,000. माय डियर स्टूडेंट, द टोटल लोन हमारे पास कितना हो गया था 30,000. इतना हमें पेमेंट करना था. माय डियर स्टूडेंट, जब हमने अपनी एसेट को सेल आउट करा तो एसेट बेच के हमारे पास पैसा आया 25,000, 25,000. अब हम हाउ कैन बी पॉसिबल दैट वी कैन पे द 30,000 रुपीज़? इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड पे द आउटसाइड लायबिलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड पे द आउटसाइड लायबिलिटी, माय डियर स्टूडेंट, एंड आउटसाइड लायबिलिटी इज मिसेस ए. तो दैट्स वाई वी शुड पे द 20,000 रुपीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड पे द 20,000 रुपीज़ टू मिसेस ए. देन नाउ वी हैव ओनली 5,000 रुपीज़, क्योंकि 25,000 रुपये हमारे पास हैं, एसेट बेच के हमारे पास आए. तो नाउ वी हैव द 5,000, ओनली 5,000 रुपीज़ विल बी रिसीव्ड बाय बी. माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ कॉन्सेप्ट एंड सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1922 इज सेइंग लाइक दिस. माय डियर स्टूडेंट, आई होप you understood this concept. So thank you very much and God bless you, my dear student.